अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग सर का गोश्त का सालन बना रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और ट्रेडिशनल वे में आज हम लोग बना के दिखाएंगे। चलिए। आज हम लोग सर का गोश्त रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनाने वाले हैं। पहले इसमें हम लोग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। रॉ स्पाइसेस के साथ साथ इसी में हम लोग स्लाइस्ड ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग करी लीव्स ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग हरा मसाला ऐड करेंगे, फाइनली चॉप्ड मिंट और कोरिएंडर लीव्स। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस भी ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनिश शेड में आते ही हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में थोड़ा सा भुने के बाद इसी में हम लोग फाइनली चॉप्ड टमाटोस ऐड करेंगे। टमाटोस भी अच्छी तरह ऑनियंस के साथ पक गए बाद इसी में हम लोग टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। ऑनियंस और टमाटोस का मसाला अच्छी तरह प्रिपेयर हो गए बाद जो पहले ही कट करे हुए सर का गोश्त इसमें ऐड करेंगे। दस मिनट तक ऑयल में अच्छी तरह भुने के बाद सारे पीसेस में हम लोग थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे।
सारे पीसेस अच्छी तरह बॉईल हुए तक हम लोग लिड क्लोज करके रखेंगे। सारे मसालों में पीसेस अच्छी तरह पकते वक्त ही इसमें हम लोग क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर भी ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है, लेकिन इसी को और भी मज़ेदार करने के लिए हम लोग इसमें ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला ऐड करेंगे। फाइनली इसमें हम लोग फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव्स ऐड करेंगे। राइस के साथ इसी रेसिपी मज़ेदार रहेगा। हम लोग नीडी पीपल को पेट भर खाने के साथ ये ग्रेवी करी खिलाएंगे। चलिए। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए।
और नवाब्स किचन ऑफिशियल फेसबुक पेज पे ढेर सारे वीडियोस अवेलेबल है और उसको देखिए, एंजॉय करिए और पेज को भी फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारी टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।